हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लासी में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हम बात करेंगे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या आता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू आती है Q/R। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, तो हम स्टार्टिंग में मानेंगे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग टू चार्जेस -Q एंड +Q सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a विद सेंटर O। दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, here this is the line which is the axial line of electric dipole, at which this is the P point where we have to calculate the electric potential. The distance of electric potential from point O will be equal to R. This is our all consideration. Now we have to calculate the electric potential at P due to -Q charge, that will be equal to suppose V1. Okay, this negative charge is a point charge. Okay, so from this point charge to P point the distance is equal to R plus में A. So इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू Q/R प्लस में A, बट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल इज आल्सो नेगेटिव, सो वी पुट हेयर साइन नेगेटिव. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू R माइनस में A. ओके, so electric potential at P due to +Q charge, that will be equal to V2. Now potential due to this +Q charge will be Q upon में distance R minus में A. Okay, now as you know the potential is a scalar quantity. ठीक है, at any point we have to calculate the electric potential, that will be equal to sum of all the potential at that point. Now net electric potential at point P, that will be V1 plus में V2. now here V minus में Q upon में R plus में A and V2 Q upon में R plus में. so here KQ is taken as common, -R plus A plus ये R माइनस में A है, R माइनस में A. ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई इट, टेकन एज LCM R plus A and R minus A. मल्टीप्लाई दिस, दैट बिकम -R plus में A. मल्टीप्लाई दिस plus R plus में A. -R to +R, that will be cancel. now KQ into A plus A, that will be equal to 2A. A plus B, A minus B, that will be equal to A square minus B square. now this become R square minus में A square. okay, this is the term that will be Q into में 2A. this Q into 2A is equal to dipole moment. now potential at point P become Kp upon में R square minus में A square. okay, this is the potential at axial line due to any dipole. okay, now we find the electric potential due to a short dipole, that is also known as ideal dipole. due to ideal dipole, ideal dipole means A is very less than R. So
r square minus में a square, that will be equal to r square. So due to short dipole or ideal dipole, electric potential at axial point become kp upon में r square. This is the final expression for electric potential at point P that will be on the axial line of electric dipole. Okay student, you have to learn this formula. Okay, thank you very much.